हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में टेक्निकल टेक पे। तो गाइस ये है महिंद्रा का जाइलो और आज हम लोग इसका डीजल फिल्टर को चेंज करने वाला है। तो ये है न्यू डीजल फिल्टर और आज हम लोग इसको लगाने वाला है और इसका एमआरपी है 685। तो ये महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग पुराना वाला जो डीजल फिल्टर लगा हुआ है इसको खोलना पड़ेगा। तो ये रेडिएटर का साइड में रहता है। तो अभी हम लोग इसका कूलेंट पाइप को खोला है रैंक्स को घुसाने के लिए और इसमें 40 नंबर 2 बोल्ट लगा हुआ रहता है और 2 डीजल पाइप लगा हुआ रहता है। इसको खोलने के बाद ये डीजल फिल्टर आ जाएगा बाहर में और इसके बाद हम आपको अच्छा से देखेंगे इसका डीजल फिल्टर को। तो गाइस इसका डीजल फिल्टर को चेंज करने के कारण ये गाड़ी रनिंग कंडीशन में ऑफ हो जाता है, तो चलते चलते ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको तो इसका या तो डीजल फिल्टर चौक होगा या तो इसका डीजल फिल्टर में गंदा होगा ना। तो वीडियो में बना रहे वीडियो को आप लोग स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग आगे। तो अभी हम लोग नया डीजल फिल्टर को लगा देंगे। तो इसके पहले अभी हम लोग इसको अच्छे से वॉश कर देंगे डीजल फिल्टर का केसिंग को। These my dance make it hurt.
तो गाइस अभी हम लोग का काम हो चुका है कंप्लीट। डीजल फिल्टर को अभी हम लोग टाइट कर दिया है। तो अभी हम लोग गाड़ी को एक बार जाके स्टार्ट करेंगे। तो सब कुछ लगा दिया है। तो पहले क्या होता था, गाड़ी चलते चलते अचानक रुक जाता था, स्टार्ट ऑफ हो जाता था। तो इसका जो डीजल फिल्टर था वो हम लोग को चौक मिला है। डीजल फिल्टर गंदा भी था। तो बहुत ही बढ़िया से स्टार्ट हो गया गाड़ी। तो अभी हम लोग का काम हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।